हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के टूल्स। ठीक है, बट बिफोर वी डू दैट आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग माय वीडियोस, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे फीडबैक दें। यू आर वेलकम टू राइट टू मी डायरेक्टली और इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। इफ यू वांट टू राइट टू मी एंड टेल मी अबाउट द फीडबैक, माय ईमेल आईडी इज connect@freshertoleaders.com। ओके, बट अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज दैट आई प्रोवाइड, ऑन द कंटेंट दैट आई शेयर, लाइक द वे आई फिल्म दिस वीडियोज और एडिटिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव मी फीडबैक ऑन, you are welcome to write in the comment box of any video that you would love to. I will be more than happy to respond to you and I'll be really thankful to you to help me grow and improve every day. So topic here is personal branding और उसके tools. Personal branding मैंने एक already एक वीडियो बना रखा है. I've explained you why personal branding is important for every individual. Be it you are a working professional और या आप you are a business owner, या आप एक coach हो, mentor हो, right? और you are a founder, you are an entrepreneur, you are a CEO, CFO, whosoever you are. It's very important to make sure that you carry a brand and that has to be your personal brand. So if Vajinder Kumar is perceived as an author in one community, Vajinder Kumar is perceived as an entrepreneur in the other, right? And in the third community, Vajinder Kumar is also perceived as a coach of the working professionals. Many things. So one person have multiple personalities because of the branding that person has done, because how the people are perceiving you. So I hope I was able to explain you what is branding and why personal branding is important. और पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, उसके क्या क्या टूल्स हैं। मैं थोड़ा सा और बात करते हैं। फॉर मी पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में इज़ लेस फेस टू फेस। आई एम नॉट डिनाइंग फेस टू फेस इंपॉर्टेंट, लेस फेस टू फेस, बट मोर पीपल परसीव यू ऑन द इंटरनेट। ओके, तो सोशल मीडिया इज वन टूल. Second tool is content writing, right? Third tool that I can think of is writing a book. Okay, and the fourth tool here is the way you perceive yourself face to face. तो तीन आपके ऑनलाइन के हो गए और एक आपका ऑफलाइन का हो गया. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. These are the broad categories that we have. Okay, for this video I've picked up a category which is very less spoken about, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, और उसके लिए मेहनत कम है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. एंड दैट्स कॉल्ड बुक राइटिंग. सो टू मी, राइटिंग अ बुक ऑन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. नो, व्हाई एम आई सेइंग दैट? इसके पीछे क्या रैशनल है? यू नो व्हाट, जब आपके नाम के आगे ऑथर लग जाता है ना, देन यू आर परसीव्ड एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड. Okay, then something is written, so people understand you and people take you very seriously, and they know this guy knows something, because they understand that this guy knows something, because he knows something. उसने उसके बारे में लिख दिया, अच्छे से लिखा, इन डिटेल लिखा, रिसर्च किया, उसका एक्सपर्टीज है, वो चाहता है कि लाइफ लोगों की चेंज हो. ठीक है, so when you write something, that is stamped and that is approved, right? And when you write and you are able to publish that in the world, then you become the author. And authors are trusted and authors are taken very, very seriously. Hence, be it you are a CEO, be it you are a VP, AVP in a company, you have an expertise in one area or the other. It could be professional or personal. कई बंदे रिलेशनशिप में एक्सपर्ट हैं, कई सक्सेस कोचिंग में एक्सपर्ट हैं, कई लोग एक्सपर्ट हैं, they want to share what they have done. Why we are waiting for to turn 60 to write an autobiography? Why can't we write today and start adding it? Start adding the and start adding content to it. If you have an expertise on negotiation skills, why don't you share with the people? Right? So the best way to share it and then get money out of it as well. That's the major part. Get the passive income. You write once and you get the money for the lifetime. For the lifetime of the book, for the lifetime of you, for the lifetime of the platforms that are available out there. Now, what are the challenges that everyone face when they think of writing a book? पहला तो चैलेंज ये होता है कि लिखना पड़ेगा. एफर्ट है भाई, बहुत एफर्ट है. मेरे पास कहाँ टाइम है? मैं तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता. मैं तो ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ, या मैं तो अपने स्टार्टअप में इतना बिजी हूँ दैट आई डू नॉट गेट टाइम टू पेन डाउन एनीथिंग एक्सेप्ट द टू डूज दैट आई डू. इनफैक्ट टू डूज भी मैं लिखता ही नहीं आजकल. राइट, दैट्स द फर्स्ट फियर दैट एवरीवन हैज, यूजुअली हैज. कॉमन फियर वी आर टॉकिंग अबाउट, एवरीवन हैज देयर स्पेसिफिक्स. सेकंड इज, हाउ वुड पीपल परसीव मी? मैंने कुछ लिख दिया यार, लोग पढ़ेंगे, लोगों ने क्या लिख रहा है यार ये. This person does not have any sense to write.
because everyone have just different, everyone has different perception about what they about the topic you're writing, ठीक है. तो fear of criticism, fear of rejection, ठीक है. और क्या लिखा मैंने? हाँ, अनसर्टनिटी, ठीक है. मुझे ये नहीं पता यार मेरी पब्लिश हो जाएगी बुक या नहीं होगी. मुझे ये नहीं पता था मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व. राइटिंग प्रोसेस क्या है भाई? पहले लिखना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसको पहला ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, दूसरा ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, किसी से एडिटिंग करानी पड़ेगी, या बुक कवर भी लाना पड़ेगा. बट अगर बिकी नहीं तो, एक भी किताब बिकी नहीं तो क्या होगा? तो मेनी सब स्टेप्स पीपल आर रियली वरिड अबाउट. कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं मरने का टाइम नहीं है. आई डो नॉट हैव टाइम टू डाई. यू आर आस्किंग मी टू राइट अ बुक, राइट? आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. व्हाट एल्स? सेल्फ डाउट. The final one is self-doubt. People are doubting themselves. They know their expertise in something. I am sure each and every one of you who's watching my video, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी चीज़ें आपके अंदर ज़रूर हैं जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं. People trust you for that. लोग कहते हैं ब्लाइंडली इसके पास जाओ यार, इस बंदे के पास ना कोई ना कोई फॉर्मूला होता है to fix an issue. And that can be your expertise. To me, once author is written, right, besides your name, you are an authority in that subject. जब आपके नाम के पीछे लेखक लिखा जाता है उस पुस्तक का, जिस पुस्तक को आपने लिखा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाते हो ऑटोमेटिकली. आपको किसी को बताने की, किसी स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है. इमेजिन योर ब्रांड वैल्यू, इमेजिन योर फ्यूचर वैल्यू, इमेजिन द मनी दैट यू कैन आस्क फॉर पीपल, राइट? सो दीज वर दी पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर इन टर्म्स ऑफ. अब हम एक एक करके इन सारी फियर्स को तोड़ेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटिंग प्रोसेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. हर एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दो. इससे 2 चीज़ें एड्रेस होंगी. आपका टाइम मैनेजमेंट एड्रेस होगा. इफ़ यू कैन, आई टेल यू, सो आई कैन प्रॉमिस विद यू, इफ़ यू स्पेंड 30 minutes a day every day, in dedicate 30 minutes only for 30 days, you can write a beautiful book. I did that, right? And here is the evidence. Sorry, again. And here is the evidence of it. I was able to finish my book in 30 days, and then of course there were a lot of activity that I was supposed to do. I took 90 days to complete a complete book. But the book can be written in 30 days. If I was able to do that, if I was able to write my book without any support, right, you can also do that. But still, I'm here to help you out. All right? I am conducting a workshop, a 3-day workshop by the end of this month. I'll share the details in the description box, where I'll be teaching you live. No recording. I'll be teaching you live, right? Face to face. And I'll tell you step by step approach, right? Every day we'll meet for 3 to 4 hours. And I'll explain you कैसे एक किताब के आइडिया से लेके किताब पब्लिश कर सकते हो आप, उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पुश कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन सेल इट आउट. इट्स वेरी इजी, राइट? इट जस्ट, यू नीड टू जस्ट ब्रेक डाउन इनटू द मल्टीपल स्टेप्स. ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट आप बात कर रहे हो. 30 मिनट रोज का कोई नहीं दे सकता क्या? यू आर राइटिंग 30 मिनट्स का यूट्यूब मत देखो 1 महीने के लिए. 30 मिनट्स का नेटफ्लिक्स मत देखो 1 महीने के लिए. जस्ट स्पेंड विद मी 30 minutes a day, right? Or maximum 1 hour. If you can spend 1 hour, तो मज़ा ही आ जाएगा. 30 minutes to 1 hour a day, if you spend specifically to write a book or to publish a book, you are there. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितने सालों से एस्पायरिंग ऑथर बन के बैठे हैं कि हाँ कभी तो लिखूंगा किताब, रिटायरमेंट से पहले तो एक बार लिखूंगा, राइट? If you are aspired to do that, or even if you are not aspired to do that, you just want to build your brand, this is a very important element and can't be ignored. और मेरी वर्कशॉप में अगर आपने कभी एक आर्टिकल भी नहीं लिखा सिवाय ऑफिस की ईमेल के, you will still be able to write a book. I'll make sure I get it done. Okay? और the pain point that I've shared on the top, ये सारी पेन पॉइंट हर एक राइटर गुजरता है इनमें से. मैं भी गुजरा था. आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पेन पॉइंट. मुझे भी लग रहा था यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ मैं, राइट? पता नहीं मैं लिखूंगा लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं जो मैं लिख रहा हूँ विल दैट मेक सेंस, विल द पब्लिशर एक्सेप्ट इट और नॉट. All those fears I've also gone through. Yeah, I can be treated as, what is this guy doing? I don't know. Many things. Self-doubt was there in my head as well. But I was part of a community where everyone was a first-time author. Right? I understood the crux of it. I understood how to build your brand. So point here is, what is your why? Why do you want to write a book? My why was very strong. Okay, you should have a strong why. When you have a strong why, result will appear. ये सोचिए किताब क्यों लिखनी है.
मैंने बता दिया पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. दैट कुड बी वन ऑफ योर रीज़न. Your reason could be you want to share with people what your experiences were in a particular field. You want to make an impact in the world. You want to share legacy for your generations to come. You want to be listed as an author in Amazon or maybe in the rest of the world. So the reasons are endless. Well, find out yours. क्या आप अथॉरिटी बनना चाहते हो मार्केट में? ठीक है, और कोई भी रीज़न हो सकता है. सो एनी रीज़न, फाइंड आउट योर रीज़न. सो वंस यू फाइंड योर वाई, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम. 30 मिनट मुझे दीजिए हर रोज़. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 30 मिनट में कैसे किताब लिखी जाती है. 3 दिन का वर्कशॉप चलाऊंगा. यू शुड बी एबल टू रजिस्टर फ्रॉम द लिंक दैट आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर यू फॉलो दैट. ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मेरी वर्कशॉप में आइए. 3 दिन में आई विल मेक श्योर दैट यू टेक एवरी टूल, एवरी टेक्निक, everything that I used, right? I will not hide anything. Everything, each and everything that I used to write and finish my book and publish my book, ठीक है, I will give it to you. You can use it and make yourself and call yourself an author from aspiring author. ठीक है, so this was the first topic on the personal branding after the overall personal branding that I've shared. So एक मैं chain चला रहा हूँ. There'll be places again for the personal branding stuff. The way we did for communication, remember? Similarly, and we also did for coaching and mentoring process, I remember. So now this time, there'll be a series of videos on personal branding. We covered book writing today. Okay? And then we will write how to master LinkedIn and then how to master the other social media channels, right? How to make sure that people perceive you as a brand. Okay? Within few weeks, you will be able to understand that you are at a different level. Just keep listening to my videos. If you don't understand once, replay them. Watch multiple times. Understand. बैक करो, आगे करो, बैक करो, आगे करो, देखो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ. Guys, whatever I'm sharing with you is not something that I've read in the books. It's from my own experience. Things that helped me, I want to share them with open heart. So make sure you follow through. Alright? Thank you so very much for watching, guys. So if you like this content, make sure you like, share and subscribe and share with the people who really need the help. And share it with people further. Thank you so very much. Bye for now.